Hello and welcome to AM Guide Assam. In this video, I am going to discuss a most important topic of contract law, that is contract of indemnity. So what is contract of indemnity? Along with that, what are the rights of an indemnity holder? And lastly, when can an indemnifier be made liable? So this topic is important for all sort of law exam, semester or any other judicial exam. So this can be said as law of contract, that is contract of indemnity. So first of all, you will have to understand what is indemnity. Okay, so indemnity means protection against loss. For example, person A is harming person B, or person A causes loss of person B, then in this contract, person A who has caused a damage to person B, so he will have to pay compensation to B for the loss that he has caused to him. Okay, so chapter 7 of the Indian Contract Act 1872 contains the legal provisions governing a contract of indemnity and a contract of guarantee in India. Okay, so chapter 7 of the Indian Contract Act, it deals with contract of indemnity. Now looking at section 124 of the Indian Contract Act defines a contract of indemnity as a contract wherein one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. So in contract of indemnity, the contract is signed by the two parties with a promise that if party A causes a damage to party B, then he will compensate him. ओके अगर पार्टी ए, दो पार्टी है इस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के एक लॉस कर दिया तो उसका कॉम्पेंसेट वो बाद में कर देगा, तो ये एक प्रोमिस होता है इसमें. नाउ a contract of indemnity can provide protection against loss caused by number 1 by the conduct of the promisor or by the conduct of any other person. so indemnity का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किस पोजीशन पे अप्लाई होता है? नंबर 1 by the conduct of the promisor, number 2 by conduct of any other person. Then under the Indian law, a contract of indemnity can only provide for losses caused by human agency, whereas in England it includes a promise to save the other person from loss caused by whether by acts of promisor or by any other person or any other event like fire, accident, etc. तो इंडिया में क्या होता है, अगर कोई आदमी दूसरे आदमी का कोई लॉस कर देता है तो उसको जो है कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन इंग्लैंड में एक्सेप्ट इंक्लूडिंग कॉन्डक्ट ऑफ एनी पर्सन, एक्सीडेंट और फायर, ऐसे चीज़ में भी अगर कोई लॉस हुआ तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड. नाउ इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी there are several parties. Number 1 is indemnifier. Okay, so who is indemnifier? The person who makes a promise to indemnify against the loss or to make good the loss or promisor is called an indemnifier. A and B is entering into a contract. So अगर A ये promise करता है कि मैं जो भी लॉस होगा तुमको इस काम के दौरान मैं I will give you compensation. So A is promising, so the promisor is called as indemnifier. Next, indemnity holder. Who is indemnity holder? The person in whose favor such a promise to indemnify is made or the promisee is called indemnity holder. तो जिस आदमी को यह प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको अगर कोई लॉस हुआ, कोई नुकसान हुआ तो भरपाई मिलेगा, तो उसको बोला जाता है प्रोमिसी और इंडेमनिटी होल्डर. ओके. Next, for example, Anil enters into a contract with Swapnil to indemnify him against the consequences of any proceedings which Mrinal may initiate against Swapnil in respect of a certain sum of 2000. In this contract, Anil and the indemnifier, Anil is the indemnifier and Swapnil is the indemnity holder. एक कॉन्ट्रैक्ट है अनिल और स्वप्निल के बीच में कि अगर मृणाल का जो कोई भी एक्शन है वो स्वप्निल का कोई लॉस क्रिएट करता है तो अनिल उसको 2000 रुपीज़ कॉम्पेंसेशन देगा. तो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट अनिल इज द इंडेमनिफायर. दैट मीन्स अनिल ने प्रॉमिस किया तो वो प्रोमिसर
और जिसको प्रोमिस किया गया है स्वप्निल इज द प्रोमिसी और इंडेमनिटी होल्डर. I think it's clear now. Now let's look at main features of contract of indemnity. So it involves two parties, that is promisor being the indemnifier and the promisee being the indemnity holder. Now object of the contract of indemnity is to protect from a loss. जो कोई भी लॉस हो एक काम के दौरान तो उसका भरपाई करना यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मेन पर्पस. नाउ एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट बी to indemnify against a loss caused by any act or conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये क्या होता है कि अगर एक इंडेमनीफायर एक आदमी है जिसने ये प्रोमिस किया कि मैं आपको कॉम्पेंसेशन दूंगा, सिर्फ मेरे एक्ट्स के तहत मेरे एक्ट्स के लिए जो भी लॉस हुआ है वही नहीं, मतलब बल्कि द पर्सन दैट आई हैव अपॉइंटेड, मैंने जिसको अपॉइंट किया उसके काम के वजह से अगर आपका कोई लॉस हुआ उसका भी मैं भरपाई करूँगा. सो दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ इट इज नॉट कॉन्टिजेंट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ सम थर्ड पर्सन. नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनिटी होल्डर जो है इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसका लॉस हुआ है प्रोमिसी, उसका क्या क्या राइट होगा. तो सेक्शन 125 of the Indian Contract Act 1872 covers rights of indemnity holder when sued. This section provides for the right of indemnity holder to recover the damages and costs that he may have been compelled to pay in a suit filed against him in a case where the indemnity holder has promised such indemnity, where a contract of indemnity to that effect exists. The right of indemnity holder are as follows. Okay, number 1, right to recover from the promisor the damages that he may be compelled to pay in a suit in respect of any matter to which the promise to indemnity applies. Okay, number 1 is right to recover from the promisor. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका राइट क्या क्या होगा. प्रोमिसर ने कोई भी प्रोमिस किया है तो उसको वो देना होगा. सो नंबर 1 इज राइट टू रिकवर. नंबर 2, राइट टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर ऑल द कॉस्ट दैट ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट. ओके, जो कोई भी सूट है, कोई भी सूट में वो जो देने के लिए तैयार था, कंपेल किया गया, वो रिकवर करना होगा प्रोमिसर को. ओके, नेक्स्ट ये है राइट टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर all such sums that he paid under the terms of any compromise or of any suit, provided the compromise was not contrary to to the orders of the promisor, and such promise is as the promisee would have made, okay, while acting in a prudent manner, even if such contract of indemnity did not exist. और ये भी हो सकता है कि दैट द प्रोमिसर हैड ऑथोराइज्ड द प्रोमिसी टू कॉम्प्रोमाइज द सूट. यह है उसका राइट. तो 3 राइट था. एंड लास्टली, व्हेन कैन एन इंडेमनीफायर बी मेड लाइबल. इंडेमनीफायर जो है जिसको लॉस हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, तो उसका लाइबिलिटी कब अराइज होगा. ओके, सो a pertinent question that arises with regard to contract of indemnity is when does the liability of indemnifier commences or arises. Originally, under English law, the rule was that the indemnity holder cannot recover the amount unless he had suffered actual loss, or you must be indemnified before you can claim to be indemnified. फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, सो ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए है इंडेमनीफायर, ए है प्रोमिसर और ये है प्रोमिसी. देखो, ए है इंडेमनिटी होल्डर और ये है इंडेमनीफायर. तो इंडेमनीफायर जो है, ए ने प्रोमिस किया कि अगर आपका कोई नुकसान हुआ तो मैं आपको ये अमाउंट दूंगा, लेकिन बी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो वो कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता. ओके, दैट मीन्स in case if you want to claim compensation, the loss should be occurred. Okay, the damages should be seen. Next, however, this section this position of law changed in Richardson Ray ex parte, the governors of St. Thomas's Hospital. It was held that indemnity is not necessarily given by repayment after payment, but it requires that
the party to be indemnified shall never have to pay. Okay, now this principle was followed by the Calcutta High Court in Osman Jamal and Sons Limited versus Gopal Purushottam in 1928. Now Indian law का position क्या होगा? As far as Indian position is concerned, the Bombay High Court in Gazanan Moreshwar versus Moreshwar Madan held that the equitable principle applicable in England shall be applicable to India too, and therefore, where the indemnity holder has incurred a liability and that liability is absolute, now he is entitled to call upon the indemnifier to save him from that liability and pay it off. Okay. इंडियन केस में एक केस था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि द इक्विटेबल प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन इंग्लैंड शैल बी एप्लीकेबल इन इंडिया टू। इंग्लैंड में जो इक्विटेबल प्रिंसिपल है कि जो लॉस हुआ है वो देखना होगा, देखने के लायक होना होगा कि एक्चुअल में डैमेज हुआ है तभी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। एंड देयरफॉर वेयर द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ इनकर्ड अ लायबिलिटी एंड दैट लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट, जो भी लाइबिलिटी इंडेमनिटी होल्डर का है और एब्सोल्यूट है, ही इज एंटाइटल्ड टू कॉल अपॉन द इंडेमनिफायर टू सेव हिम फ्रॉम दैट लाइबिलिटी एंड पे इट ऑफ। तो वो तभी वो इंडेमनिफायर को कॉल कर सकता है कि आपको मुझे देना होगा और वो ले सकता है। दैट इज contract of indemnity. Okay, so in this question I have discussed contract of indemnity, definition, rights of an indemnity holder, and lastly, when can an indemnifier be made liable. So if you need more questions from any chapter of law or any section or any topic of law, then subscribe to my channel and share with your friends. So I'm ending this video here. Thank you so much for watching the video. Have a great day.